మా సింగింగ్ బౌల్ ఉందా తీసుకో. మోకం కరోతి మోకం కరోతి సాధూనాం మోకం కరోతి ఋషీణాం మోకం కరోతి మునీనాం మోకం కరోతి యోగినాం మోకం కరోతి గురూణాం విధురకాల విధురకాల ప్రాతకాల బ్రహ్మకాల సంధ్యాకాల అరుణ కాల అరుణ కాల ఉషకాల ఉదయకాల వాచాలం వాచాలం గురు పద్మపాదుకాన్ వాచాలం గురు పద్మపాదుకాన్ మానసాంతర భావయే మానసాంతర భావయే హృదయాంతర భావయే నమస్కరోమి తత్ప్రణమామి ప్రీడాన్ transcending time, early morning, heartfelt salutation to the lotus feet of all those sages, all those saints
technologies of yoga at the lotus feet, under the lotus under. We are lucky, fortunate, still we get technologies of yoga. Yogena chittasya padena vacha malam sharirasya vaijyakena cha yopakarotam pravaram muninam patanjali pranjali pranatosmi. Yogena chittasya, the one who has given the science of purification of the mind, called Yoga Darshana. Yogena chittasya padena vacha, the one who restored the legacy of the Shrauta Sampradaya, the sound of connecting Sanskrit, the one who restored the legacy of the Sanskrit grammar, the culture of cultivation of the Parabrahma, Kaivalya, Allah, Tawheed, the Holy Spirit, the one who restored the sound of connecting, called Panini, the grammar of the Sanskrit, the architect, the author of the Sanskrit grammar. He is also Patanjali. The author of the Yoga Darshana is also Patanjali. Malam sharirasya, the one who has given the technologies of purification of the body, the medicine of the body, to cure any disease, to purify the body, called Charaka Samhita, is also known as a Charaka because his original name is not known. That's why he is referred as a Charaka. Malam sharirasya vaijyakena cha yopakarotam pravaram muninam, the one who has given the technologies of ahara, like a nala, what to eat, what not to eat. The one who is Yopakarotam Pravaram Muninam, among all those master chefs, is the chief of the master chef, who knows how to serve a delicious dish. Should anyone prepare it, swallow it, whether it is yoga, whether it is Sanskrit, whether it is Ayurveda, whether it is technologies of the cooking for the health and well-being, one will remain healthy and happy. Patanjali Pranjali, the one who has jumped out of the world of conditioning, the reincarnation of the Lord Vishnu's Adishesha in the name of the Patanjali, in the avatara of the Patanjali, the one who has given the technologies of the yoga is always
admired, adorable by every yogi. Ajana Purushakaram Shankha Chakrasi Dharina Sahasra Shirasam Shvetam Patanjali Mupasmahe. He is called as the reincarnation of the Adishesha, reincarnation of the Vishnu's favorite. That's why he also holds in one hand the conch called Panchajanya, the technologies of the Samadhi, tuning in. In one hand he holds the technologies of Sudarshana. He is the one who has given the technologies of Dharana. Out of 4 chapters of Yoga Darshana, the second chapter ends with Dharana, Dhyana, Samadhi. How to apply the technology of Dharana, Deshabandha Chittasya Dharana, to purify entire body and mind at the unconscious level, to change the gene expression and to become a great human, a good human. The theme of this International Yoga Day is all about a humanity. It's all about humanity. A human with a humanity is the ultimate goal of yoga. A yogi means he is devoid of any animal qualities. He possesses only a human qualities. That is the goal of yoga. The goal of yoga is to remove all qualities of the animal, instincts, emotions, and to get transformed into a great human being with the human qualities called a humanity. Our chief executive might arrive at any point of time, so we don't have to wait in yoga. Extend your legs into the front, free your shoulders, prepare your limbs. Please come. Please come. Sir, please. Finally, we have 2 chief executives here. So S.K. Jha and S.K. Jha sir and Dinesh Srivas, they want to speak at the end. So thank you, sir, for giving. All this show, what you are seeing is just incredible contribution and initiation of our Kshetra Palaka, our chief executive Dinesh Srivastava, Dr. Dinesh Srivastava, and his close friend, closest friend, S.K. Jha sir is here. Such a synergy exists. So we begin our practice. So as it is, you sit down. So sir wants to speak at the end of the day. So tomorrow also we have actual International Yoga Day. International Yoga Day, why it is celebrated on 21st June? As you all know, it is the longest day, but there are certain things you know. It is called Midhuna Rashi, Maidhuna Rashi. The sun transcends into, so into the Gemini, the zodiac quadrant, constellation in the sky. The sun enters into this, called Gemini or a Maidhuna Rashi. Maidhuna, Ahara Nidra Bhaya Maidhunancha Samanyato Meva Pashurbhi Naranam. During this period, the Maidhuna is not permitted for the human because this period is lot of heat and the rains start coming. The rains start coming so that there is a lot of moisture, so a lot of possibility of the bacteria, virus. That's why Ashada starts. Ashada, the month starts where a girl goes into her mother's place. So Maidhuna of the human is prevented, is avoided in this season.
whereas Maidhuna for animals is allowed. And in this period, the Maidhuna means the germ immortality. Every animal is designed for only for ahara, for food, nidra, for sleep, bhaya. Their way of life is in only the survival is for the death. The fight is for only the death. They're scared of only the death of their prey. That's why ahara, nidra, bhaya, maidhunancha. Every species, reptilians, insects, every animal is programmed only for one thing, to continue their progeny. That's called maidhuna. Unlike them, during this period, so we can work for eternal immortality called dvija. Only human can attain it. A human is the most evolved organism. So that his aim is to become a yogi, to make use of this hardware and software to fulfill the mission DNA called complete happiness, achieving happiness. The day we make our DNA stress is zero, you reach a state called total conservation of energy. So tensionless, anxiety-less, stress-less, mind and body is called a yogi. When there is a zero stress, your body becomes a ketogenic. After all, we need only a glass of milk for us to live. That is what this body and mind can achieve. That's called, the purpose is to achieve that level of least quantum state of energy or absolute conservation state of energy. That's why this period for a human is defined precisely for germ immortality. That is the difference between an animal and human. It's called jnanena adhiko visheshato, dharmena adhiko visheshato, naranam, dharmena hina pashubhis samana. If we only don't work for what our body and mind is given by our parents, what it can achieve, to conserve the energy, then we are like leading a life by default like any animal. Dharmena hena pashubhis samana. That's why during this period we are celebrating. So entire world is celebrating International Yoga Day. The theme as humanity. Humanity. Dharmena hena pashubhis samana. As a human, we are supposed to possess only with the human qualities. If we lead our life, fight and flight mechanism, reacting with the emotion that consume oxygen, that shortens our lifespan, that brings all the diseases, then we are leading life like an animal. So, dharmena hena pashubhis samana. So, as a human, we are supposed to lead a life with the human qualities. That is the theme of this year, International Yoga Day, Humanity. A human with the human qualities, with the humanity, is called a yogi. A yogi means he is devoid of any negative emotions, any negative gene expressions like anger, arishad vargas, delusions, lust, and devoid of any kind of fear, anxiety, tension. So now, with this we begin our preparation for International Yoga Day tomorrow. Free your shoulders and gently. So bring your left leg into the straight and raise your right knee up. Free your groin area where your femoral hernia, inguinal hernia is situated. Preparing the joints and the muscles in the legs, very important. It's called Ardha Baddha Konasana. What we are doing, Ardha Titali Asana. Any exercise before we go into the walking or running, preparing the body is a must. Warming up not necessary to raising the heart, you should know. Warming up is all about removing the tension, anxiety, tension from every muscle. Your groin area is very, very important, especially for the woman. The reproductive system is so fragile. So for the solid element, liquid element down in the pelvic region to flow free,
That is the secret of anyone's health. If they flow free, if there is no block in your excretory system, your urinary and reproductive system, you are the most healthiest person. So these are the postures that releases the tension from our lower abdominal area. Now stretch your right leg into the front, raise your left knee up. So free your left groin area, your left femoral area, your left inguinal hernial area, preparing your colon area, exercising it, preparing your left gluteus, major, minor, your left gluteus medius. Yoga is all to do very gently. It is not consumption of energy. It is all about, aim is conservation of energy. Yoga is not about anaerobic mechanisms. It is promoting about aerobic mechanisms. Anaerobic pathway is all about creatine, phosphate, glycogen. They are the animal. Animals function from only two fields called glycogen and creatine phosphate. They are fight and flight mechanism they are used. But unlike them, a human is designed to program not with the creatine phosphate or a glycogen metabolism, anaerobic pathways which are very energy intensive, calorie intensive. We are designed to program for ketogenic body, programmed for aerobic pathways of metabolism, using oxygen, metabolizing the carbon dioxide, metabolizing the carbohydrate for the highest production of ATP. That precisely makes yoga entirely distinct from any anaerobic exercises, like going to the intense exercises. So like a contractions, like a powerful sprinter, like a 100-meter sprinter, a 200-meter sprinter, a 400-meter runner, 1000-meter runner is using glycogen pathways, using a creatine phosphate pathways in yoga, so they suffer from high blood pressure. Similarly, on the other end, so ultra-marathon runners, they suffer from low blood pressure and asthma. So yoga is a perfect balance in between. When you say fitness, it is not like a 100-meter, so or a 1000-meter, a sprint or a running, a endurance program, or it is an ultra-marathon runner or it is a marathon runner, where one has a low blood pressure, a high blood pressure. It is exactly a balance between these two. Now, so raise your knees up, gently sit up, and go into the front, free your shoulders, free your knees, gently stand up. Free your shoulders. The first part in yoga is preparing your entire spine and pumping in oxygen to your brain. So preparing our lungs and our carotid arteries and coronary artery system. So keep your right foot perpendicular to the left foot. So how freely you do. This exercise will tell you what tightness you have, how much you can let go of the body. Your fitness is directly proportional to agility of the body. Agility is all about freedom of the movement of a joint, how freely your limbs move. So it is like this. Your hands, when they go up, it is like a drinking of water. So inhale like this, and so observe my left foot, observe foot and hip and shoulders. All your observation in yoga is all about feet, a teacher's hip region and shoulder region. Inhale, exhale, and go back. Observe how my right knee goes, how my right foot goes, how I observe my entire back. It is called torsional exercise, torsional movement. Whatever the stresses accumulated on your back, it is a way to remove those stresses accumulated, strain accumulated. Inhale and go into the front. Do it correctly. Observe. Yoga is all about observation. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Gently inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. Drop your arms and move your hands like a simple pendulum. A simple pendulum represents total conservation of energy, a harmonic motion. Yoga is all about achieving harmony. Yoga means harmony, union, conservation of energy. So gently moving your arms. So throughout the day, so all of us, we are using the brain. So either we use our laptop or we sit in front of the desk all the time. So all our back is strained and spine is strained, and we are using the brain, so it requires more of oxygen. 19% of our calories by default goes to the brain. Highest calories goes to the liver. So now, since we use the brain more, so we need to pump oxygen much more than 19%. All these will allow to remove. On your back, you are working by doing this on latissimus dorsi, on trapezius, and your erector spinae, your piriformis muscles. You are working on your oblique internals and externals. So these are the where, or by when you are driving a car or your bike or sitting, so the stress is accumulated on the back. This is the way we remove. Now keep your left foot perpendicular to the right foot at 45 degrees angle. Remember, yoga is all about a matika, medho matika, meditation, medhita, matika, is all about geometry, is all about angles. Then only the conservation of energy happens. So you have to be, yoga is not about great things, it is all about small things, sukshma. Your observation has to be sukshma. It is all about tactful way of doing, yukti. Yukti means it's a tactful way of doing. It is not using the force or, so using the energy. Spending energy in yoga is killing ourselves. So it is all about observation. Now, on the left side, Vamachalana, inhale, gently, exhale, inhale, 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 and gently drop your arms and free your shoulders, free your arms, free your deltoid, free your bicep, free your tricep, free your shoulder adductors, abductors, and gently move from front to back, back to front. So this is going worldwide to all our students, all my students world over, more than 3,000 students from all countries. So there's one girl came all the way from Saudi only to attend this event. Yesterday I was telling our chief executive, so how people get motivated. Free your arms, inhale, exhale. Keep your legs apart and gently and free your, just watch the feet behind you. Watch the feet behind you. In India, the tradition is not to look at the face, but look at the feet and worship the feet. So there is so much. Soul is in the soul. If we are in the head, so we are always judgmental, always reactions. That's why in India people well understood. So we only know the traditions in India is only to worship the soul, worship the lotus feet. Soul in soul. So we are human with the humanity, humbleness, humility. So watch behind only the soul and no movement. So torsional rotations that remove your sacral and your lumbar, any kind of the L4, L5, S1, S2. This is a way to lubricate them. This is a way to free them.
It is the way to free the tension from your erector spinae minor and also up to the transverse erector spinae. Gently, be gentle. As I told you, as if you are so tired when there is no energy in you, the way you move, so that's called zero resistance. So the same way you should move when you move around. Don't use any energy. Using energy is nothing but building a resistance, understand. That is anaerobic exercise it becomes. That becomes anabolic. When muscle is contracted, ATP is not metabolized. ATP is metabolized only when muscle is expanded, completely relaxed. Now gently, free your shoulders, free your deltoid, raise them. There is a way to free your trapezius. Is a way to release your neck inferior oblique muscles. They are the responsible. Anyone having cervical problem, they are not able to move their neck left side or the right side. It is precisely the C3, C4, C5, the oblique muscles are tight. Why? Because they are being pulled by the trapezius, upper trapezius. Upper trapezius, you touch it, it is like a solid because you keep all the time your hand like this, keep working, or you hold your mobile phone like this. It is all about, it goes anabolic. Your trapezius becomes so stiff, so lactic acid is accumulated, it is never relaxed. So this exercise allows it to relax your entire trapezius. Those who go into the gym, they enormously harm by lifting their weights and so imposing pressure on the trapezius slowly, and the neck becomes shortened. You must have observed the weightlifter, the neck becomes short. Free your shoulder, the heart shrinks and the neck shrinks. So the left ventricle chamber volume comes down. In yoga, exactly opposite. Now we go into very gentle way of Srishtikrama, means the way gentle way of exercising your heart. If you raise the heart, and it is only killing the heart. A Japanese famous cardiologist who is very well known, went back to America in late 50s, in the early 50s. So he is a world famous cardiologist. He said raising the heart is killing the heart. No way you can achieve it. In fact, he is right. So I started with this example. It is all about, so fitness of the heart you want to achieve, just to have a rocking chair in your house, a traditional rock chair with a 70-degree angle. When you lie down in a rock chair, when you move like this, your heart is designed to pump top to down, down to top, exercising longitudinal muscle. So eccentric stretch, you have to pull your heart from top end to down end, like this. That is called eccentric. That is only the way to increase the chamber volume, ejection fraction. When you take your diagnostic reports, so he will give you what is your end diastolic volume, what is your ejection fraction. Check whether you are doing proper exercise or not, whether your heart is functioning or not. There are two measures. One is the diagnostic report. Second is your rest heart rate will tell you whether your fitness exercise, whether your running is giving you. If your rest heart rate is 70, means you are not fit. If your rest heart rate is 60, means your exercise is favoring you. If your rest heart rate is around 45, means you are doing fantastic. If your rest heart rate is 20, 27, you are called a yogi. My rest heart rate is 22. So your fitness is of endurance is known by your rest heart. That is a single parameter. Your fitness watch will give you what is your rest heart rate. So that is called, so working cardio. So precisely. So you have to always remember, it is not applying the resistance, applying the pressure on your heart makes your heart healthy. It is all about how you stretch. It is like a balloon filled with the water and you move like this, how it stretches. You try to push like this, you try to beat like this, your balloon. And which consumes more energy? So this consumes minimum energy. If you push, if you throw like this, it consumes maximum. Your heart function is designed exactly like that. It is designed to be like this by gravity. So any heart exercise, remember, it is not in this way you work.
Traditionally in India, we all know, we work like this. All of you know, as the children, we have done all this like this. It is not that our ancestors are dummies. Understand? Everything given in our culture is highly scientific. Today we have forgone. That's the reason we are ending up in a problem. If you really analyze with the exercise physiology as a base, you will end up appreciating our ancestors. Now, we do a couple of the gentle way of exercising the heart. This is more than enough to achieve complete cardio fitness. So to achieve your rest heart rate, to minimize it. So observe, these are called Tibetan. If you really want to learn yoga, you have to go to the Himalayas. So observe, this is a plantar flexion. So gently, if you lift your heel up, and remember, so it is like a balloon in your body, like a leather pouch. Every organ is going up and down. 1 inhalation, 3 exhalations. Very gently do it. Don't strain at all. Your knee is bending a little bit. So let's start. Forced inhalation, forced exhalation helps. Any COVID debris is accumulated, because this is a way to remove it. These are called internal respiratory Bhastrika Pranayama. Seven times. Now your lungs are empty. Filling your lungs. Inspiratory volume, tidal volume. Inhale, exhale. These are called Anga Chalnas traditionally. These are called Vibhaga Pranayama, sectional breathings. In yoga, you breathe in separately for clavicular region of the lungs and intercostal region of the lungs, middle parts of the lungs, and diaphragmatic parts of the lungs, inferior parts of the lungs. These are called sectional breathings, are called Vibhaga Pranayama. There is nowhere in the world that there are the systems of breathing designed exclusively as per the anatomy of the lungs. Our lungs are threefold, so superior lobes and medial lobes and inferior lobes. So from the time immemorial, so the Vibhaga Pranayama, sectional breathing techniques are always. Every Indian in India is supposed to do every morning Anga Chalnas, Anghanyasas, Karanyasas. We have forgone our culture. Once again, inhale, filling in your lungs. Your chest into the front, shoulders onto the back. You must feel you are filling your lungs, achieving 4.2 liters of complete tidal volume. Exhale. 12 breaths per minute. You are still consuming. You are called a healthy person, a 70 kg body weight. If you can achieve 6 breaths per minute, you are the most robust health. You will never fall sick. If you can achieve 3 breaths per minute, you are a yogi. If you achieve 1 breath per minute, like a Krishnamacharya, like my guru who lived 101 years, you are the best. So only 1 breath is sufficient. And so minimum number of strokes, all that your heart has to beat is less number of times to meet the requirement, oxygen requirement of the body. It is unlike the other way around you think. These are the way to achieve it. Inhale once again. Exhale. You call warming up Sushtikrama. In yoga, you always start with a gentle way of warming. Metabolic power means ability to make your heart to achieve that sufficiency to pump. Metabolic power, metabolic capacity. So in yoga, you achieve minimum heart rate by working in a krama called Sushtikrama. That's called cardio, or you call endurance, or you call sprint, whatever you call. So that is called aerobic training of the heart. It's not that in yoga you don't have. In fact, in yoga, you have the best methodologies to achieve cardio fitness. Free your shoulders, drop your shoulders. Now, we go around energizing clockwise. Everything in the universe moves clockwise.
So every planet, every solar system, every galaxy. So that's why energizing. So purification is other way around, anti-clockwise, clockwise. So we go around the same plantar flexion, like gently, very gently lift it like this. Eight directions, worshipping 8 directions. We do very gently. So have you done it? Shall we do it? After I show you, you should do. You are very fast because you are NFCians now. Free your shoulders. So again, residual volume means, so once all the carbon dioxide pocketed, when you do the forced breathing, it goes out. The challenge in the COVID is all about accumulation of the CO2. Only the forced inhalation, exhalation makes your CO2 zero. Remember always, in yoga, so tidal volume, increasing the lungs capacity, pranayamas are different. Making the residual volume zero, pranayamas are different. Like Bastrika, Kapalabhati, Agnisar, Uddhyan, Nauli, and all these, Mahabandhan, all these comes under the class of making your residual volume zero. On other hand, so Pravrutti Pranayamas means Surya Bedi, Chandra Bedi, and sectional breathing techniques, all these comes under increasing the lungs capacity. Both have to be well balanced. So now other way of doing, inhale, exhale, inhale, observe. Exterior intercostal breathing, sectional breathing. It is for your heart and lungs area. Exhale, inhale, your arms behind your shoulders. You can feel your lungs. Exhale, inhale, exhale. Interior, inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Free your arms. Every exhalation, whenever you are raising your heart out, emptying out your lungs again, is our duty to fill our lungs and normalize our heart rate. So that's the way a heart quickly, protein synthesis in the heart, as well as again ATP generation in the heart is very quick because the highest mitochondrial density is in your heart. Heart is designed completely with the aerobic muscle. Free your shoulders. Drop your shoulders. So last one, your aerobic, simple aerobic exercise, we have done two. One is in plantar flexion. Second one is simply this. So the third one is, so simply it is called, it is, bone density is a big problem to achieve both. So X chromosome, we have to move in X chromosome, moving in infinity, these days like in our Anukrida, so Prangan there over there, you can see now, so walking along the 8, walking along the infinity. In yoga, everything in Indian culture, you see, you go like this, you go like this. So it is a mind programming basically. So locomotor coordination and developing cognitive development in the childhood, perfectly achieving it. So similarly in yoga, you go like this, observe, inhale, the bone density formula is very simple. The number of weight applied and number of times you apply that load on your bone. This is the simplest, easiest way to boost your bone density in the shortest period of time. In a way, you call it a thin mar, So stand there in your place
and ready to go in X direction. You are going like this, and again you are going like this. X chromosome. Inhale, exhale. Inhale, exhale. In India, every function, every celebration at home proceeds by the jumpings. We dance. It's not a dance, but training your heart. So because in a function everyone is tired, in order to meet oxygen requirement, so our ancestors have given us the technology how to jump, if we understand. Once again, inhale. Hold the breath. Exhale. Filling your lungs once again. Inhale. Exhale. Inhale. Anterior intercostal breathing, pumping into the front part of your heart, into the lungs, anterior. Exhale. Once again. Inhale. Your arms behind, your chest into the front. Exhale. Your inhalation includes holding the breath. Now swimming. Inhale. Posterior intercostal breathing, pumping oxygen to the backside of the lungs. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Inferior intercostal breathing. Exhale. Free your arms. The best way to release your trapezius when you are tired, your neck is, these are the things. Very simple, crossing your arms, and once you do it, your entire trapezius gets freed. That's the way to, very gentle way of working with the heart in yoga. Now inhale, raise your shoulders, take your elbows, bring your chest into the front, lift your chest up, hold the breath and drop it. Very powerful breathing. Anytime you struggle for the breath, this is the quickest and strongest way of, called a box breathing to your lungs. Inhale, bring your chest into the front. You can really feel how much you can feel. Exhale, drop your arms, free your shoulders. Very powerful way of breathing, very powerful pranayama. Inhale, exhale. Inhale, exhale. For your cardiorespiratory fitness, ensure when you walk, when you work, your shoulders are behind, your clavicles, your chest pectoralis is always into the front. So the only reason why we end up in having a problem is, so when you are working, we forget your shoulders slip into the front, you will have a drooping. So that drooping, the two kinds of the drooping, one is moving your shoulders into the front all the time working. That actually contracts your heart, that shrinks your lungs. That's one of the main reasons which you have to be careful when you are working on your laptop or working in front of the desk, number one. Number two is dropping your shoulders all the time. It pulls your, actually, your neck oblique muscles downward. This is another drooping. These two should be avoided
So whenever possible, try to raise your shoulders and it completely frees your neck. All your stress and strain, reptilian brain is the one which is, whenever you stress, that takes, whatever increases the heart rate, that is a reptilian brain involved, pons area involved. Any increase in the respiration, any increase in the heart rate, you are straining, you are using the pons area with the result. So you will develop a lot of pulling here, a lot of neck problem here. One of the reason is the stress. So how to release it is this very simple one. Now the next one, so we go down. Inhale and come down, exhale. Inhale up, bend your knees. You don't have to go completely front. If you don't bend your knee, you are hurting your back and you are damaging your hamstring, you are damaging your back. Many people tell you, don't bend your knee. I am telling you to bend your knee. If you don't bend, you are not working. It's a very powerful exercise for the heart only when you bend your knee and your heart goes reverse direction. And you have to levitate. So your arms are up so that it becomes very smooth. Come on. Inhale, exhale, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up. Drop your arms. In the same way, the next posture, we are going down and we keep our arms down. So bending our knees. So next series of the posture we are entering into. Inhale, now bend your knees, go down and bring your arms into the front. Take your left leg back, take your right leg back, bring your knees down. If you have a weak knees, fold your mat like this and bring your knees onto the mat like this. Vagra Vala Chalanasana. Imagine the tiger walking in the forest, how graciously it walks. If you walk like that, all your back problems are solved and your glute muscles gets enormously strengthened. Especially these days, the women glute muscles are weak. So with first delivery itself, their back is out. So this is meant for strengthening the back. For the men, testosterone production muscles. For the woman, estrogen maintaining muscles are the glutes. So both these areas are differently designed for the men versus the woman. Whether you are a man or a woman, strengthen your glutes. Inhale, exhale. It frees, it strengthens your lumbar spine. Now free your shoulders front and back and free your neck. Marjalasana, called a big tiger, Vagrachalanasana. Inhale, exhale. Now gently from here, so keep your arms into the front. Rakshanakrama, strength training or a weight training. Raise your knees up. Stay there. Ekam dvenam trinam chaturam panchama shadamam saptamam. Bring your knees back down. Free your shoulders. That's the traditional way of staying in the posture to that duration. So you are contracting the muscle so that muscle membrane, sarcomere is a muscle cell, it is called. So there are the adult stem cells. So the membrane gets ruptured, those adult cells releases activation. So for that activation only we are applying the contraction. That contraction is called resistance training, weight training. That inflammation, programmed inflammation, rupturing the muscle membrane is called resistance training, weight training, metabolic training, a gym training. In yoga, you do that in a programmed way, very balanced way. The objective in yoga is to develop lean muscle. Lean muscle develops only with the eccentric stretch. The maximum amount of satellite cells proliferation, differentiation happens only eccentric stretch. Understand why we are using
This contraction, upper plank, it's called Urdhva Chaturangasana. Once again, inhale, raise your knees up. Ekam dvenam trinam chaturam panchama saptamam. Bring your knees down. Again, relax. That triggers anabolic events. That contracts the muscle. That activates your protein synthesis. That activates your android signaling. You're signaling your DNA to generate, to expand the cell volume, to take in the released satellite cells, daughter cells, to expand your muscle. Your muscle expands by hypertrophy, it's called. So only when you contract and release. Now when you are releasing this, ATP is produced. Again that ATP is used when you contract. It's not that you apply continuously contraction, then you damage. That's one of the reasons for fibromyalgia or a consistent pain in the muscles. Inhale, exhale. Understand what we do. It is the greatest science given by the yogis. It is not that they are the dummies. If you really go into the deeper aspects of today's developed exercise physiology and anatomy, understand the underlying principles which every Olympian in abroad uses, like this year archery, a person used employing a German coach. Now you understand what the importance of the biomechanics. Entire yoga is all about understanding body of stability, working within the zone of the mat, understanding the principles of conservation of energy. Now free your shoulders, well done, the first phase. Understand each posture what you are doing. Now gently cross your hands like this, clasp your hands, elbows apart. We are doing elbow down dog. Inhale and going to free your shoulders, free your back. Inhale, stretch your back up, down dog in elbow plank. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ekam dvenam trinam chaturam panchama shadamam saptamam. Inhale, in exhalation, bring your knees down. Bring your knees down and take your arms up. Free again, free yourself. You see, already your knees must be paining because you never used to go on the knees. That's why in abroad they bring, so balloons, water filled, already upakarnas are available. They have everything available, so they bring with a bag of all those props in yoga. So they know how to do this, so they keep those cushions under the knees and they do it. So that much they are prepared. In India, so how far we are behind in understanding our preparation for yoga. You see, you should know that. How prepared they are. They come with a bag of props. For which posture, which prop they have to use, they know very well. In India, why do we need? We are designed to sit down on the floor. We are designed to walk on our knees entire childhood. Isn't it? Now don't dump your children in the wheelchair and go in the park. We are not designed like that. So now cross your fingers, elbows apart. Once again, elbow down dog. Very powerful for your heart. Your heart goes inversion. All inversions are very powerful, quickest way of achieving your cardio fitness. Inhale, raise your knees up and your back. You push your waist back. Inhale, exhale. Ekam dvenam trinam chaturam panchama shadamam saptamam. Inhale, go into the front, into the elbow plank and lie down, आराम से. अब साहब अभी टार्चर हो गया सब. अब कितना आराम है सब. ये बोलते हैं ना, योगा बोलते हैं इसको. मकरासन. आपके दोनों पाँव जो है ना ऊपर उठाए आराम से. सो दोनों हाथ सामने रखें, आपके सिर नीचे रखें. कीप योर शोल्डर्स फ्री, मूव योर शोल्डर्स फ्रंट एंड बैक. आहा, स्वर्ग इधर ही है साहब. बाद में आएगा नहीं आएगा बाद की बात है. आराम से. Bring your toes down like this and roll your seat.
freeing your lumbar from your sacrum. Freeing your lumbar from your sacrum. So roll your seat आराम से, आपके आसन को बाएं तरफ दाएं तरफ, आपके कंधे को सामने तरफ पीछे तरफ, आराम से. Inhale, exhale, आराम से. Those who are having back problems, let me tell you, these are the best. No physiotherapy can do any goodness than this. Physician, heal thyself. It is all about tvamevam, curing yourself, healing yourself. Yoga is all about in a gentle way. Now raise your feet up, cross your feet like this, drop your feet freely. Inhale, free your shoulders. Inhale, exhale. This itself frees your erector spinae, your back. Those with the back problems, whether you have back problem or not, every day you are traveling in a car or on a bike, whether you drive or you travel, when you sit in a chair morning to evening, these are must for you to free your spine. Inhale, exhale. Now gently open your feet up, again drop them, again roll your seat. Roll your seat. Gently, gently roll your seat. Keep adjusting your neck, keeping it comfortable, moving your shoulders front and back, freeing your deltoid, freeing your trapezius, freeing your neck muscles. Very, very important. Inhale, exhale, very gentle way of freeing your back. Now gently raise your feet up and now drop your feet onto the left side. Keep your neck onto the right side. Drop your both the feet on the left side. ऐसा रेज करके आपके दोनों पांव बाएं तरफ ढीला छोड़ देना. आपकी जो मुंह है, आपके गर्दन जो है, दाएं तरफ रहना. बिल्कुल ढीला छोड़ देना. महसूस करना कि आपके कमर में पूरी तरह आराम. सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, आराम करें. आराम से करने की होते हैं योगा. जो भी इन्फ्लेमेशन है निकालने की होते हैं योगा. और इन्फ्लेमेशन को ज्यादा करने की, दर्द को ज्यादा करने की नहीं होता है. दर्द है और दर्द की व्यायाम करोगी और ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं. समझना है. सांस लेते हुए दोनों पांव ऊपर, सांस छोड़ते हुए अभी दोनों पांव दाएं तरफ ढीला छोड़ें. Inhale, drop your both the feet onto the right side, your neck onto the left side, turn your neck onto the left side, आपके सिर को बाएं तरफ और आपके दोनों पांव दाएं तरफ. आराम से सुकून से आपके पूरा ध्यान जो है कमर में रहे. यही है आपको जो एनर्जी कंजर्व करते हैं, एनर्जी देते हैं. एटीपी का प्रोडक्शन शक्ति बढ़ाने की क्रिया है. कम खाना है, ज्यादा शक्ति उत्पादन करना है. वही योगा होते हैं. जब भी होते हैं मसल रिलैक्स होते हैं, आराम रहते हैं, बिना टेंशन, बिना एंग्जाइटी जब रहते हैं आपके मसल, आपके सेल. आराम से सांस लेते हुए दोनों पांव और बीच में लाएं और नीचे लाएं. और अभी कमर को फिर बाएं तरफ दाएं तरफ ढीला, आराम से ढीला, आराम से. These are very good for those within 1 week. All your back problem just gets solved. You will be amazed. You have a disc degeneration, disc compression. You have all these problems, slip disc. These are the very simple ways of bringing alignment. These are the simple ways of lubricating them, rejuvenating them. Inhale. Now raise your feet up. Inhale. थोड़ा आपकी छाती को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ सामने लगाएं, आपके कंधे को सामने तरफ पीछे तरफ. Inhale, exhale, आराम से. निरालंबन आसन, ये बहुत अच्छा है आपके कमर के लिए. बस दोनों पांव जो है सो ऊपर सिर्फ ऐसा रखना है. थोड़ा पांव जो है आपकी
सिर की तरफ थोड़ा आगे रहना, बस सुकून से रहना। जहाँ आपके पाँव रखे, जहाँ आपको सुकून रहे वो उधर ही रखना है। आपकी कैपेसिटी उतना ही है। किसी को देख के आप लगाने का चक्कर में नहीं रहना, वो तो मारने के होते हैं, मरने के होते हैं। किसी को देखने का नहीं है योगा, अपने आप स्वाध्याय होते हैं। स्वधर्मो श्रेय परधर्मो निश्रेय है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, अपना कर्म अलग है, अपना स्वभाव अलग होते हैं। योगा जो है हर एक आदमी के लिए अलग होते हैं। किसी को देख के कॉम्पिटिशन में नहीं जाना। शोल्डर्स को आराम करें। अभी दोनों हाथ आपके छाती का बाजू में रखें, कंधे को ऊपर नीचे करें। कंधे को ऊपर नीचे करें, सांस लीजिए और ऊपर उठाएं छाती को। ये रक्षणाक्रम होते हैं। शोल्डर्स को फ्री करें। ये बहुत अच्छा, ये अप डॉग पोस्चर बोलते हैं। इनहेल सांस लेना है, सांस छोड़ना है। कमर के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है, तो इसीलिए आपके पाँव को ऊपर उठा रहे हैं और पाँव नीचे लगाए, आपको कमर खींचते हैं, इसलिए पाँव ऊपर लगाए हैं। सांस लीजिए और छोड़ते हुए आराम से आपकी कमर फिर वापस ले लें। दोनों हाथ सामने रखें। अभी आपके सिर को नीचे रखें। हाफ डॉग पोस्चर, अर्ध श्वानासन। थोड़ा आपके आसन को बाएं तरफ, दाएं तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड। योर सीट gently moving and bring your forehead down. The quickest way of normalizing your blood pressure, the quickest way of normalizing your pulse rate. Whenever your pulse rate goes up, you go, ये यही एक हमारा मुस्लिम ब्रदर करते हैं, चर्च में हमारा बुद्धिस्ट ब्रदर करते हैं, हम भी करते हैं। टेंपल में जाके जो प्रेयर करते हैं, ये पावरफुल पोस्चर है। इसीलिए जाते हैं टेंपल को, हमारा मन शांत करने के लिए, हमारा ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, हमारा पल्स रेट को कम करने के लिए। क्योंकि इधर हाथ जो है आप देखे हुए हैं, ये जो है क्लाविकल रीजन में ड्रॉप होते हैं अपने आप, सो इनको आराम मिलते हैं। सांस लेना आराम से, सांस छोड़ना। योगा होते हैं जल्दी जल्दी करने का नहीं होते हैं भाई, समझना है। एक कंट्रैक्शन होते हैं, एक रिलैक्सेशन होते हैं। सिर्फ कंट्रैक्शन नहीं होते हैं, आराम से करने की होते हैं। जब भी महसूस होना कि कितना शांत मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है अभी दर्द रहेगा बाद में सुख रहेगा, ऐसा नहीं है। योगा जो होते हैं प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानि, अभी महसूस करने की होते हैं, एक क्षण में महसूस करने की होते हैं। सांस लीजिए अभी आराम से, आपके सिर को ऊपर और व्याघ्र वाला चालन में आपके कंधे को ढीला छोड़ें, आपकी कमर को ढीला छोड़ें आराम से। आपके स्पाइन के लिए, आपके मसल्स के लिए, one is contraction, one is relaxation, everything we are doing. Inhale, थोड़ा आगे रहे और ऐसा आगे रहे और आपके दोनों हाथ पीछे ले लें, फ्री योर शोल्डर्स, और दोनों आपके पैर जो है सामने। अभी पेट पे जो करने की किया है, बैठने की किया है और कड़े की किया है, अभी जो है सुपाइन की पोस्चर जो है आराम कर लीजिए आपके शोल्डर्स को। और त्रिकूट आसन, ये बहुत बेहतरीन पोस्चर है। आपके एल्बोज पे आना है, शोल्डर्स को फ्रंट एंड बैक पुश करना है और दोनों घुटने ऊपर हैं। सो आपके कमर और आपके गर्दन को ढीला करने की और आराम करने की, जो भी टेंशन है निकालने की होते हैं, इसको बोलते हैं त्रिकोट आसन। यही आसन में आप जो है आपकी ताकत बढ़ाने की, पेट कम होने की, आपकी यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गर्भाशय, इनको ताकत देने की होते हैं। सो स्टमक फ्लैटनिंग होते हैं, इनके मतलब नहीं है सो हमको टॉर्चर करने की नहीं रहता है। सांस लीजिए, ऐसा सामने जाइए और सांस छोड़िए, फिर वापस आइए और नीचे रखें, फिर आराम कर ले। वन कंट्रैक्शन
and one relaxation. Always remember, one is anabolic, catabolism, anabolic action, catabolic action, both have to be followed. You are consuming, when your muscle is contracting, it is consuming ATP, triggering the event of protein synthesis, whatever the molecules required for your body to repair, rejuvenate, and your body DNA is so powerful, whatever the required peptide is there, whatever the required protein molecule is there, it will produce. जब कंट्रैक्ट करते हैं, फिर जब रिलैक्स करते हैं, जब वो कंट्रैक्शन के लिए जो होना चाहिए एटीपी वो प्रोड्यूस होते हैं. ये जो है पैरेलल चलते रहना है. फिर एक बार सांस लिए और दोनों पैर सामने रखें और दोनों हाथ आराम से सामने रखें. सांस लीजिए, सांस छोड़िए आराम से. और सांस छोड़ते हुए अगर आपके पैर नीचे गए, आपकी जो है ट्रंक नीचे गए और इफेक्ट पड़ता है. बट जितना एंगल ऊपर रहे इतना आसानी होते हैं. अभी आज आए हैं ग्राउंड पे, अभी एक दिन में तो योगी नहीं बना सकते, है ना. सो बनाने के चक्कर भी नहीं, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है. इसीलिए हम जितना कर सके आराम से उतना ही करना है. अगर ज्यादा करें तो मुश्किल है. सांस लीजिए और एक बार चालानासन, विचित्र करनी बोलते हैं, नावासन बोलते हैं. आराम से, जैसे एंगल कम होते हैं बहुत इफेक्टिव बनता है, इसीलिए 45 डिग्रीज बस है. सांस लीजिए और छोड़िए आराम से. फिर शोल्डर्स को आराम से, कंधे को सामने तरफ पीछे तरफ, क्योंकि आपकी कमर पे और गर्दन पे इफेक्ट रहता है जब कंट्रैक्शन में. फिर इनको आराम करना होता है. सांस लीजिए और सांस छोड़िए. अभी आपकी गर्दन को ऐसा नीचे लाएं, आपके दोनों हाथ आपकी गर्दन का नीचे लगाएं. आपकी गर्दन को बाएं तरफ दाएं तरफ ऐसा रोल कीजिए. Keep your hands under the neck, roll your neck left side and right side. Because this is a way to exercise your neck, those with the cervical problem. If you don't keep your hands under the neck, let me tell you, you are only damaging your neck. Your neck needs enough cushioning, enough groove to form. So your palms are designed to form that groove, and so that in which your neck moves. Your neck muscles are designed to move in the palm. इनहेल एक्सहेल, कितने आराम मिलता है आपको, तुरंत महसूस होता है. यही तरीका है आपकी C3, C4, C5 जो मसल्स हैं, नेक सर्वाइकल प्रॉब्लम होते हैं, C1, C2 जो होते हैं आपके सिर को लेफ्ट साइड राइट साइड, ऊपर नीचे, लेफ्ट साइड राइट साइड मूव होने की होते हैं. ये जो है इसमें C1, C2 एक्सरसाइज होते हैं. आपके सर्वाइकल ऊपरी भाग C1, C2 जो है वो मैंडिबुलर, वो एटलस बोलते हैं. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग योर नेक लेफ्ट टू राइट. सो ये इसमें इनको एक्सरसाइज होते हैं. आराम से आराम से. अभी दोनों नीज को भी फ्री कर लीजिए. आपकी दाएं पैर जो है बाएं घुटने पे रखें आराम से. आप ही आपका किंग हैं, इसीलिए ऐसा. सो आप पांव आप ही बाएं घुटने पे रखें. सो आराम कीजिए ऐसा सामने पीछे. ये जो है आपकी एंटायर टेल बोन एरिया, हाफ ऑफ द टेल बोन, right side of the tailbone you're extending, because tailbone is always fused area, so it has a limited movement. So इनको बढ़ाने की you are using your hip joint, your glutes etc. जिनके कमर में दर्द है, सियाटिका प्रॉब्लम है, वो ये जो है बहुत अच्छा है. अभी क्रॉस कीजिए, ये जो लेग है अभी ऐसा क्रॉस कीजिए. अभी ये जो लेग है बाएं तरफ ऐसा बाएं तरफ, लेफ्ट साइड, टर्न लेफ्ट साइड आराम से. आहा कितने सुकून है सब. आपकी पूरा ध्यान जो है कमर में रहे. ये जो है टू रिलीज योर S1, S2 from L4, L5 to work on transversal direction, rotational direction, diagonal direction across the muscle in your lower back area. Inhale, gently raise your knees up, फिर वापस आइए,
फिर आपके पैर जो है, दाएं पाँव जो है बाएं घुटने पे रखें. कीप योर राइट फुट ऑन द लेफ्ट नी. आराम से फ्री योर right knee. Inhale, exhale, bring your legs down, and bring your left foot onto the right knee. Free your left knee. अभी जो है बाएं पाँव दाएं घुटने पे रखें, and आराम से left knee. Free your left knee. Inhale, exhale. अर्धा मच्छिंद्रासन बैठ के करना. किन से होता है जी आजकल? इसना सो लेग्स जो है डाइनिंग टेबल पे है, अभी पूरा व्यवहार जो है ऑफिस में टेबल पे है, बैठने की आदत नहीं है. अधमच्छेन्द्रियासन अच्छा है तो भी कितने लोग करेगा? इतना फ्लेक्सिबिलिटी किधर है? अभी ये आसन में वो होता है तो कमर को आराम मिलता है, मजबूत होते हैं. ये क्रॉस करने की जो होते हैं मच्छिंद्रियासन की होते हैं. अभी जो है टर्न टू द राइट साइड, टर्न टू द राइट साइड ऐसा. सो यूज योर राइट आर्म लाइक ए पिल्लो. आराम से रहें. सांस लीजिए, सांस छोड़िए आराम से. Inhale, exhale. It increases the blood circulation. It removes the resistance from your sacral spine, sacrum pump. There is always 4 pumps. One is called lymphatic pump, one is called blood pump, one is called dermal lymphatic pump, another one is called sacrum pump. ये दोनों पंप, इनके सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ढीला रहना, किधर भी चोक नहीं रहना. अगर चोक रहे सो पूरा रुग्मते आते हैं, पूरा व्याधि आते हैं. इसीलिए सो ये जो है सैक्रम पंप जो होते हैं, इनको आराम करते हैं, दक्षिणासन बोलते हैं, और आराम करते हैं कमर को और मजबूत करते हैं. आराम से सांस लीजिए, सांस छोड़िए. महसूस करें कि सांस लेते हुए अभी दोनों घुटने ऊपर और कमर नीचे. बाएं पांव जो है दाएं घुटने पे रखें, बाएं घुटने सामने और ऐसा पीछे. जितना मूवमेंट कर सकें उतना आराम से करें. जितना भी करें उतना आराम मिलता है. और बाएं पांव नीचे लाएं और फ्री करें. अभी जो है ऐसा ऊपर उठाएं, ऐसा जितना भी हो सके इतना ऊपर सामने आए ऐसा, और फिर शोल्डर्स को आराम करें. इतना बार पीछे जा सके उतना पीछे गए और बाहर आए. ये जो है डोलासन, रॉकिंग चेयर, एक्सलेंट फॉर योर हार्ट. लेट मी टेल यू, वेरी जेंटल वे यू डू इट. ज्यादा नहीं करने का है बस, नहीं तो आपके गर्दन में प्रॉब्लम होते हैं. बस इतना ही करें, बस आपके सिर नीचे टच होते ही फिर ऊपर आना है आराम से. दोनों लेग सामने रखें और फ्री करें. दोनों फ्री योर शोल्डर्स, फ्री योर शोल्डर्स, फ्री योर लेग्स. आसन करवा सकते हैं, आसन की प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना ग्राउंड में जो है हम जो कर सके योगा में हर एक आदमी के लिए रहते हैं. सो ऐसा नहीं है सिर्फ आप एक आसन ऐसा करे, पूरा लोग ऐसा करे तो लोग भाग जाते हैं. अगर मैं ऐसा बताए ऐसा करना बोले तो लोग भाग जाते हैं. अरे योगा बोले तो ऐसा ही करना है, यही योगा होते हैं. अगर मैं आपको बताएं ये करना है, यही योगा होते हैं, मैं बताएं किधर से होते हैं? ऐसा योगा एक भयानक हो गया. वो हमसे कहाँ होता है सब, हमारा बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी किधर है सब, ऐसा लोग बोलते हैं. ऐसा नहीं है. आज जो किया ना, अगर अंडरस्टैंड हो गए बस है, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है. आराम कर ले. अभी थोड़ा प्राणायाम करेंगे. प्राणायाम सो लंग्स की, क्योंकि कोविड के बाद पहले बार हम मिले हैं तो हमारा लंग्स का कैपेसिटी बढ़ाना है. थोड़ा बहुत करे हैं आसन में भी और थोड़ा करेंगे. प्राणायाम करें तो अच्छा रहता है. आराम से बैठिए, सुकून से बैठिए. पहले होते हैं विभाग प्राणायाम होते हैं. सो अलग अलग लंग्स को सप्लाई करने के होते हैं. सांस लीजिए, सांस छोड़िए,
Free your shoulders. आराम से वन प्राकृतिका वन वैकृतिका, एक फोर्स्ड है, एक टाइडल वॉल्यूम, एक रेसिडुअल वॉल्यूम जीरो करने की। इनहेल, ये लंग्स भरने के होते हैं। एक्सहेल, अभी लंग्स एम्प्टी करने के होते हैं। एक जो है सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लीजिए, सांस छोड़ते हुए इनहेल, फ्री योर शोल्डर्स। ये रेसिडुअल वॉल्यूम जीरो करने के पावरफुल होते हैं सामने तरफ। ये जो है ऐसा ऐसा, ये जो है जब प्रमोशन मिलता है ना, मुझे प्रमोशन मिला मिला बोल के ऐसा, प्रमोशन का बात अलग है। एनएफसी में जॉब मिला तो बस है। Inhale. These are very powerful way of making your residual volume zero. शक्ति चारण भस्त्रिका बोलते हैं। Exhale. Free your shoulders. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Free your shoulders. सेकेंड जो होता है वातक्रमा, क्योंकि कोविड की ये है, और कोविड आए नहीं आए, सो कोविड जो है इधर इंक्यूबेट होता है 7 दिन के तक, और पोल्यूशन इतना पार्टिकुलेट मैटर रहते हैं नेचर में। वातक्रम भस्त्रिका जो होते हैं अपने लिए बहुत यूज होता है। देखे, सो ये जो है बाएं नासिकाएं हैं, क्लोज करें, ये दाएं नासिकाएं। पहला आप ऑब्जर्व करें, ऐसा सांस लेते हुए आपके सिर को ऊपर, you see, because you have a microphone, you see the power, the velocity of the exhalation, forced exhalation. जो भी लंग्स में है पूरा बाहर निकालने के होते हैं। जो भी थ्रोट में, entire trachea gets emptied. You are inhaling and at once you are emptying. No resistance in your neck movement, understand? It should just follow. जब भी बाहर गए, घर में आते ही कोविड हो नहीं हो, पोल्यूशन तो है, पहला एम्प्टी करने की होते हैं। इतना ब्लैक मैटर निकालते हैं। देखो, इनहेल, exhale, वातक्रमा भस्त्रिका, very powerful it is to empty out. Inhale, exhale, inhale, exhale. The easiest way to fill tidal volume, work with the lungs, is working with its muscles, extrinsic muscles, intrinsic muscles. इसीलिए ये दोनों हाथ को जो है ऐसा लेते हैं। ये पोजीशन जो है डायरेक्ट करते हैं, आपकी लंग्स को कंट्रैक्ट करते हैं, खोलते हैं, सो जो जगह में आपके ऑक्सीजन जाएगी। दैट इज एक्सलेंट वे ऑफ, सो दे हैव गिवन अस करन्यासा, कैसे लगाना आपके हाथ, ऐसा लगाना, ऐसा लगाना, कैसे लगाना। ये जो है टेक्नोलॉजीज है, सो of the traditions in yoga. If you understand, you know, so a dancer knows what are all the mudras they do, pataka mudra and they are all yogic mudras हैं। the direct करने के ऑक्सीजन लंग्स को, so विभिन्न कोनों में, विभिन्न प्रदेशों को, और पूरा जो लंग्स को होते हैं, ये जो ग्राउंड है उतना एरिया है आपके लंग्स की। सो आप जब लेते हैं सांस, वेंटिलेशन बोलते हैं। सो खून से एक्सचेंज होना है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। ये दोनों एक्सचेंज हो गए तो भी
जब ऑक्सीजन सैचुरेशन होते हैं, इसीलिए जब मसल्स ऐसा मूव होते हैं, जब ब्लड सर्कुलेशन ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन नीचे जाते हैं, इसीलिए अंगन्यास किया जाता है, ये विभाग प्राणायाम किया जाते हैं। वही प्रकार हैं, सिर्फ लंग्स की व्यायाम करने की होते हैं। अभी बाएं नासिका से करें। अभी बाएं नासिका का पूरा एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पूरा एम्प्टी करेंगे। देख लीजिए पूरा एम्प्टी होते हैं। आपको लगता है पूरा ट्रैक है, entirely gets emptied. Whatever is there in your throat accumulated, it comes out. Once again, inhale, exhale, vata krama bhastrika. What we have done is forced inhalation, forced exhalation with anghanyasa vibhaga pranayama. Free your shoulders. Inhale, exhale, inhale, anterior breathing, chest into the front, shoulders onto the back. जब भी आप भर सकते हैं आपके लंग्स में, सांस छोड़ते हुए और फिर एक बार सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। नेक्स्ट, बाएं तरफ दाएं तरफ पेट, इधर जो है स्टमक है, इधर जो है लिवर है, दोनों तरफ आप समझते हैं सामने से ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सो जब पहला लेफ्ट करना, पहला राइट करना। सो दाएं नासिका से क्लोज करें। ये नास कौन सा भी मुद्रा है, ये नासिका मुद्रा बोलता है, वेरी सिंपल है। सो जब भी फोर्स्ड इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा में लगाना है तो ताकत मिले आपको करने के लिए। सांस लेना है, छोड़ना है, मैं बोलता हूं जैसे करें। सो हम, 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 सो हम। 40 बार किए हैं। हर एक आदमी कर सकते हैं। सामने जो होता है, पहला वामचारण भस्त्रिका अभी जो किए हैं, फिर एक बार सांस लीजिए, सांस छोड़ते रहें। पहला डिसेंडिंग कॉलन, entire left side of the abdominal muscles, adipose muscle, it completely contracts, anabolic expansion. Now we will prepare the right side, Dakshina Charana Bhastrika. एकदम कोई आदमी पीएचडी नहीं करते, समझे। सो पहला स्कूल को जाना है, प्राइमरी स्कूल को जाना है, इंटरमीडिएट करना है, ग्रेजुएशन करना है। सो हम योगा में कोशिश करते हैं डायरेक्टली पीएचडी करने का, मुश्किल होता है। सो जैसे शुरू करना है वैसा ही शुरू करना है। सो आपको तुरंत फल मिले, तुरंत महसूस होते हैं। नहीं तो ब्लड प्रेशर ऐसा सामने, अगर पेट जा रहा है ऐसा सामने पीछे ला रहा है, डायफ्राम पुशेस अप, इट कॉजेस स्ट्रेन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। मना किया है, ऐसा नहीं करना है। सो आप में सभी तरीका लोग रहते हैं, जो लायक हैं वो ये करना है। हम जो करते हैं, कर सके हैं, वो आपको नहीं सिखाना है। अभी और एक बार सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए,
सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए. फ्री योर शोल्डर्स. इनहेल, एक्सहेल. अभी जो है भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका मतलब जो फ्लेचर रहते हैं, ब्लैक स्मिथ रहते हैं, इनके पास जो हैं सो जो क्रो बार शार्प करने की, प्लो की ब्लेड शार्प करने की जो होते हैं, लेदर सैचेस रहता है. वो लेदर पाउचेस को, लेदर सैचेस को क्या करते हैं, वो नीचे ऊपर दबाते हैं, ऐसा ऐसा दबाते हैं, ऐसा ऐसा दबाते हैं. तो the kiln, it will burn all the fuel, it will burn. That is the meaning of भस्त्रिका in Sanskrit. समझना है भस्त्रिका क्या है. आपके डायफ्राम को जो है ऐसा कर रहा है, आपके लंग्स को जो है ऐसा कर रहा है, जो भी डिपॉजिट हुआ है उनको सो बर्न कर रहा है, ऑक्सीजन को सो बढ़ा रहा है. आप ऑक्सीजन ऐड करके इम्प्योरिटीज को ज्ञान सो जल रहा है, जलना हो रहा है. सो जो होते हैं अग्नि होते हैं, ज्ञान होते हैं, सो इसीलिए उनको बर्न करने के होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम. बट भस्त्रिका में क्या है, इक्वल एक्सपेंशन, इक्वल कंट्रैक्शन. सांस लेने की, सांस छोड़ने की इक्वल रहता है. जब भी इनको भस्त्रिका बोलते हैं. अगर सांस छोड़ने की रहता है कपालभाति होते हैं. बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अभी बाईं नासिका को आराम से बंद करें. सो आपके हाथ कैसा लगाएं, मैं बोलता हूं सो आप करते रहें. अब ऑटोमेटिकली आपके दाएं तरफ पेट जो है अंदर बाहर जाते हैं. सो हम, 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 so hum, 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 so hum. Free your shoulders, drop your shoulders, inhale, exhale. That's how the Vamachalana, Dakshina Chalana, Bhastrika, एक कपालभाति करेंगे, वही ढंग से करेंगे. कपालभाति जो होता है, मैं बोला सिर्फ सांस छोड़ने होता है, सांस लेके छोटे होते हैं. इनको बोलते हैं सिर्फ हम हम हम. क्यों सो बोलते हैं, सांस जब अंदर जाते हैं इनकी आवाज ऐसा रहता है सो. जब सांस छोड़ते हैं, आप जानकारी रखें, जब सांस बाहर जाते हैं इनकी आवाज ऐसा रहता है हम. इसीलिए सो योगा में सो ये जो है गरुड़ संहिता में या शिव संहिता में सो या योग संहिता में यो याज्ञवल्क्य ने लिखा है, हर एक योगी जो है सो हम, सो बोले तो सांस अंदर आने की, सांस बाहर जाने की. सो उसी प्रकार वो विधान है, कितने देर सांस लेना, कितने देर सांस छोड़ना. गुरुजी ने बोलते हैं आवाज सो, जितना देर सो बोले उतना देर करना है, जितना देर हम बोले उतना देर सांस छोड़ना है. इसीलिए सो हम यूज करते हैं. वो प्राचीन भाषा है जिनसे ओम उत्पत्ति हुआ है. कपालभाति. सो सांस अभी वही लेफ्ट साइड पहला करेंगे, समझ लो. एक बार सांस लेते हैं हम 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 हम. देखे एक कपालभाति 3 बार, एक बार सांस ले तो 3 बार छोड़ रहा है. ऐसा नहीं है पूरा सांस. एक्चुअली लोग कंफ्यूजन है, कपालभाति भस्त्रिका एक ही बन गया, ऐसा नहीं है. अभी देखो हम सांस एक बार ले तो आप 4 बार भी कर सकते हैं, बट वो एडवांस होते हैं. आप सभी कर सकते हैं.
सो हम बोलते हैं, एक सांस ऐसा ही छोड़ते रहना, ग्रेडेड, जब हर एक आदमी कर सकते हैं। लंग्स को आप, यू विल नॉट बिकम आस्थमा पेशेंट, लो ब्लड प्रेशर पेशेंट या हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट। नहीं तो अगर कपालभाति गलत से करे, पहला 2 साल 3 साल नहीं होता, 4 साल के बाद पता चलता है आपके ब्लड प्रेशर, लंग्स वीक होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं। इसीलिए बहुत योगा जो है, इसीलिए बोला है, जिनकी एक्सपीरियंस है पूर्वाश्रम में करे हैं, इनके पास सो जाके सीखे। आप ही गुरु काले वच्छेदात पूर्वेशामपि, सो जो पूर्वाश्रम है उधर जाके गुरुओं को जो पांव पकड़ के, जो सेवा करके, सो उनके अनुग्रह प्राप्ति करके जो सीखते हैं वही योगा होते हैं। सो जैसे IITs हैं, जैसे NITs हैं, जैसे स्टैनफोर्ड हैं, बर्कली हैं, ऐसा ही योगा में है। सो जैसे कैलाश आश्रम है, अगर सो समझना है, जहाँ विवेकानंद स्वामी ने पढ़ा है, रामकृष्ण ने नहीं सिखाया, इनको भेजा है ऋषिकेश कैलाश आश्रम में वेद पढ़ने के, इसीलिए वो अद्वैत आश्रम बन गए। मालूम है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो है दक्षिणाश्रम में वो तंत्र है, इनको सिखाना चाहता है वैदिक मार्ग, इसीलिए इनको भेजा है। जहाँ मैंने सीखा है, सो इन 19 that was in almost in 1880, So free your shoulders, drop your shoulders. पूर्वे शामपि गुरु काले वच्छेदात, आपि गुरु काले वच्छेदात। अभी करेंगे कपालभाति, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करते, इजी हो, आराम होता है। हम 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 हम। आराम से सांस लेते हुए, सांस ऐसा, सांस लेना कम रहता है, सांस छोड़ने की होता है कपालभाति। आज जो है आप सही तरीका से कपालभाति सीखे हैं, वही विधान है करने की, बल्कि नहीं तो क्या है, ये दबाने की होता है कपालभाति। सिर्फ आजकल क्या है, पेट को ऐसा ऐसा नीचे ऊपर ऐसा चालन करने की नहीं होते। कल हमारा एक बच्चा प्लांट में दिखा रहा है, उन्होंने कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं अग्निसार। मैं बोले ये अग्निसार नहीं होता है, अग्निसार जो होते हैं पीछे मारने की होते हैं, ऐसा ऐसा मुंह होने की नहीं होते हैं। आपके दोनों पैर सामने रखें, आराम कर लें और दोनों कंधे सामने पीछे। Our time, I have to be conscious. So free your shoulders. कल जो है दूसरी तरह करेंगे। सो आज जो किए हैं बहुत अच्छा तरीका से कर रहे हैं सभी लोग, ऐसा करते रहें। सही तरीका से सीखे तो फायदा होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो है एक क्रिया करेंगे, ये बोलते हैं शक्ति चालना प्राणायाम, साइक्लिक ब्रीदिंग बोलते हैं। ये जो है क्रिया योगा में आते हैं, ये ठंडी करने के होते हैं। सो अभी तो गर्मी की मौसम है तो ठंडी करने के होते हैं, वैसा ही नहीं है। हम कर्मचारी हैं और हमारा गृह में है या सो जहाँ कर्म करते हैं, जहाँ हमने जॉब करते हैं, पूरा व्यवहार जो होता है सिंपैथेटिक होते हैं, इतनी गर्म होते हैं। सो ठंडी करने की होते हैं, क्रिया होते हैं। इसमें जो है अभी जो सीखे हैं भस्त्रिका, कपालभाति और सुकून से जो प्राणायाम, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम इक्वलाइज करने की पूरा मिलके जब करे होते हैं, क्रिया होते हैं। सो अभी वो ये करेंगे। ये ऐसा ही रहता है, जब सो बोलते हैं उतना देर सांस लीजिए, जितना देर मैं हम बोलता हूँ उतना देर सांस छोड़िए।
सो ऐसा सांस लेना है, हम ऐसा सांस छोड़ना है। सो ऐसा बोलने के बाद ऐसा 20 बार बोलता हूँ। ऐसा होने के बाद फिर मध्य गति आते हैं, सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम। सो आप कर सकते हैं, आप करे हैं। और कपालभाति इधर जो होते हैं तीव्र गति होते हैं, वो ठंडी करने के होते हैं, नोज से करने के होते हैं, पेट से नहीं। ऐसा करने के होते हैं, सही तरीका से करें। इधर इधर नहीं रहना, टेंशन इधर रहना बस। आप एट द एंड 3 साइकिल करेंगे, उसके बाद आराम से रहना है, धारणा करना है, ऊपर से नीचे देखना है। हमारा टाइम होता है, अभी करेंगे। आराम से बैठिए, आंख बंद करें। सो सिर्फ आप कुछ बोलने का नहीं, आप सुनने का है, करने का है बस। आप कुछ मुंह से बोलने का नहीं है, बोलने का मेरा है, आपके सिर्फ और रिदम से ब्रीदिंग करना है बस। आरंभ शुरू करें। सो हम 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 sam 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 sam
So हम आराम से सो हम 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 सो ham so 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 ham Last round. So ham so ham so ham so ham
so hum, 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 so so
gently without opening your eyes. आंख बिना खोले आराम से शवासन में रहें. Without opening your eyes, just lie down, lie down, lie down. Stretch your legs out, stretch your legs out, just lie down, आराम से. Excellent way you have done, आराम से. Lie down, your legs apart, your hands beside your trunk, palms facing upward. आपके दोनों पैर सामने तरफ आराम से ढीला छोड़ें, दूर रखें. आपके दोनों हाथ हथेली आपके कमर के बाजू में ऊपरी तरफ आराम से रहें. Relax entirely, relax entirely, relax, relax. Adhanga puja. So from top to down, observation that helps in purifying, removing. Now, so gently, gently, ढीला छोड़े पूरे शरीर को. Free your entire body, free your entire body. I can guarantee no one will take away your legs, your trunk, your arms. इसीलिए आराम से छोड़े, ढीला छोड़े. Just leave them, leave them. No one will take them away. Just leave them. Don't hold them. Don't hold on to them. Just leave them, leave them. Now gently, gently. Take your attention to the top of the head. Observe entire crown area. Observe entire crown area, front and back, left and right, all around top of the head. Entire top of the head, observe, observe. Urdhva virazam pujayami. Entire crown, front and back, left and right, gently, gently. All around your entire scalp, all around entire scalp. Gently, gently, observe, observe, relax. Observe, observe, entire scalp, front and back, left and right. Observe, observe, relax, relax, entire scalp. Observe, observe, relax, relax, gently, 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 onto forehead. Observe, observe, entire forehead, left and right, top to down, lalate, pujayami, entire forehead, gently, gently, entire eyebrow, relax, relax, eyebrow, eyelid, entire eye. Observe, relax, relax, netra, pujayami, gently, gently, into ear, back and front, top to down. Observe, entire other gently, gently, into your nose, top to down, left and right. Relax, relax, nasikam pujayami, gently, gently, down the nose,
nasagre pujayami, gently, gently down to mouth, entire mouth, top and down, left and right, all around, pari mukham pujayami, gently, gently into your cheek, top to down, front to back, shubhagam pujayami, gently, gently into chin and chin, gently into entire jaw, left and right, your jaw, entire face, left and right, Purnam vadanam pujayami, left and right, entire face, entire head, Purnam pujayami, gently, gently from your head down to shoulder, and shoulder, and down, kandha pujayami, entire arm, top to down, entire upper arm, front and back, left and right, entire elbow, entire forearm, entire your entire fingertip, entire arm, front and back, left and right, up to down, rela, Purnam baham pujayami, gently, gently from fingertips of fingers onto your throat, entire throat, up to down, entire chest, vakshastalam, entire ribcage, left and right, top to down, relax, asti ganguya pujayami, down to abdomen, entire abdomen, left and right, top to down, relax, Purnam udaram pujayami, entire front of your trunk, top to down, left and right, Purvangayam pujayami, gently, gently onto your neck, top to down, left and right,
Grivam Grivam Ujayami. Gently, gently, entire upper back, entire mid back, left and right, entire back. Observe, observe, relax, relax. Adha Vrishta Pujayami. Gently, gently down the back. Observe your way, cutting Pujayami. Gently, gently down to see entire lower spine. Observe, relax, relax, entire scene. Observe, asanam Ujayami. Ponam prajam, ponam meru, entire bad up to down. Relax, relax, entire drunk, front and back up to down. Ponam kayam Pujayami. Gently, gently down the trunk into thigh. Observe and thigh. Front and back, run and thigh. Relax, relax. Uru Pujayami. Gently, gently down to your knee. Janunam Pujayami. Relax, relax, and tiny Jangha, entire full leg, front and back, in and out. Observe, observe, down to ankle, Gulfa Pujayami. Gently, gently into your soul, soul in soul, so soothing it is. Observe, entire soul. Pada Variganyade Pujayami. Pada great is out entirely. Entirely top to down. Purnam Jaritam Pujayami. Front is out, gently, gently take your mind to the top of the head. Entire crown, gently, gently, entire body, freeing, freeing, front and back, entire body, relax, relax, feeling so light, feeling so light, feeling so light, feeling so light.
Gently become aware, gently, gently move your feet left and right, freeing your leg, freeing your leg. Gently, gently move your feet left and right, freeing your leg, closing your hand, open your hand. Gently, gently moving shoulders up and down, freeing your neck, moving shoulders up and down, freeing your neck. Gently, gently raising your knees, keeping your feet front of your seat, moving your knees, freeing your seat. Gently, gently bringing your hand onto your chest, onto your heart, moving shoulders up and down. Joy in your hand, joy in your hand, rubbing your palm, rubbing your palm, feeling warmthness inside your palm. Gently, gently hugging your eyes, feeling warmthness inside your palm, hugging your eyes, feeling warmthness inside your palm. Gently, gently rubbing your face, feeling warmthness inside your palm, covering your face inside your palm. Open your eyes inside your palm. Gently, gently open your hand, open your eyes, bringing your hand beside your trunk, moving shoulders up and down, pressing forearm, raising your neck, pressing forearm, raising your neck, moving your knees, freeing your seat, moving shoulders front and back, freeing your neck. Gently, gently raising your knee, freeing your seat, pressing your hand, keeping your arm behind your seat, moving shoulders front and back, freeing your neck, moving your feet left and right, freeing your legs, freeing your seat. Now I request our Chief Executive to come and say few words. I think you enjoyed the session today. Thank you all. It is all the grace goes to our Jasava, and both of them, I request both of them to come here. It is all their Krupa. It is all their Krupa Kataksha Vikshanyet. This is better. This is better. This quality is better.
श्री कुमार रेड्डी जी, वर्क्स कमेटी के सारे मेरे साथी और आज के हमारे स्पेशल अतिथि श्री एस.के. झा, CMD मिधानी और सारे NFC परिवार के सदस्य जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, सभी को मेरा अभिनंदन। ये एक बहुत ही हर्ष की बात है हमारे लिए कि इतनी सुंदर तरीके से इस टीम ने, जिसमें श्री कुमार रेड्डी और उनके साथी लोग, श्री गणेशा और उनके साथी लोग और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथी लोगों ने मिलके जो इतना खूबसूरत इसका आयोजन किया है। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, लेकिन योग के बारे में सबको मालूम है, बच्चों को मालूम है कि इसका हमारे आज के जीवन में कितना भारी और इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है कि आज अगर हमको अच्छा हेल्थ रखना है, अच्छा मन रखना है, तो हमें अपने शरीर को योगिक एक्सरसाइज करके उसको इस तरह बनाना है कि हम एक अच्छे इंसान बन के अपने शरीर का ख्याल रखते हुए इस सोसाइटी का ध्यान रख सकें। जैसा मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, आज योगा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक भारतीयता की पहचान हो गई है। आज शायद भारतीयों को इतना लोग नहीं जानते जितना योगा को लोग जानते हैं, और जब योगा की बात करते हैं तो उसके स्वाभाविक तरह से ये आता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इसके कहाँ पे इसके बारे में योगा के बारे में प्रैक्टिस किया जाता है, कहाँ पे उसके गुरु हैं, कहाँ पे उसकी संस्थाएं हैं। आप सभी को मालूम है कि वो भारत में है। तो ये योगा का जो इतना प्रचार किया जा रहा है, इसका आज महत्व सब लोग समझ रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग समझ रहे हैं। और जैसा इस साल का योगा दिवस का थीम है ह्यूमिलिटी, इससे ये पता चलता है कि योगा का पहुंच कहाँ तक है। मतलब हम एक अच्छे इंसान भी बने, ये भी पॉसिबल है योगा के प्रैक्टिसेस करके। और हमारे ख्याल से उसमें वही है कि आप अपने मन को जितना संतुलित कर सके, जितना विकसित कर सके, जितना उसको सुंदर बना सके, आपको अपना सोसाइटी, अपने लोग, सबके बारे में वैसे ही सुंदर विचार आएंगे और फिर हम एक अच्छा समाज का विकास कर पाएंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रोग्राम का मैं हिस्सा बन सका हूँ और इतनी भारी मात्रा में नंबर में संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पता चलता है कि योगा का प्रचार कितना हो रहा है। तो मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाया है और जिसमें इसमें भागीदार लिया है। सबको मेरा धन्यवाद है। जय हिंद। नमस्कार। पूरे योगी जो आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज के इस प्रोग्राम के सूत्रधार चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव, उनको सत सत नमस्कार। और स्पेशली जो इस कार्यक्रम को और इस 2 घंटे तक जो हम लोगों को बांध के रखे, और अगर आज ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया प्राउड है योगा पे, तो NFC प्राउड है कुमार रेड्डी जी के लिए, जिन्होंने ऐसे यौगिक को आपके सामने दिया है जो इतने सहजता से इस समय को हम लोगों को अच्छे ढंग से सिखाया। मैं तो रियली काफ़ी इससे उत्साहित हूँ
और मैं यही उम्मीद करता हूं कि योगा आप सबके जीवन में और अच्छी तरह से घर करे। और हमारा देश अगर एक चीज को दुनिया को जो दिया है वो योगा है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये हर एक तरह के जो पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है, कोविड या किसी तरह के महामारी से इस देश को बचाएगा। मैं आप सबका आभार हूं कि मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे मौका मिला, और आप सबके साथ मैंने भी इस पूरे क्षण को अच्छी तरह से अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने माइंड के लिए इसका उपयोग किया। धन्यवाद। Sir, yes, sir. So the breakfast is there. So beside you, please have it. Please have it. So योगा के दिन वो प्रसाद बोलते हैं. So आप परिसाद आपके पास आए हैं, भगवान ने भेजे हैं. So please have that. And so with this, and I, as our chief executive said, this program is organized by our works committee, and the works committee has taken keen initiation, and it is, the entire credit goes to them. I am only a facilitator here, only to teach, but entire credit goes to the team that are behind it. And so very active is Mr. Ganesha and is Jat and is Sridhar. These are the three very, very active members. So who made all this entire 1 week we have been conducting. Every day they are there. And so with the support of our chief executive, so you know what we can do. So you have seen. Thank you all for coming. And all senior managers, all our senior management, everyone is here. So happy to see. Sir. नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सब इधर पधारे हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। कल सुबह इसी तरह 5:45 बजे आ जाइएगा। शार्प 6 बजे हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। और विनती है एनएफसी का जो एम्प्लॉई लोगों से, निकलते वक्त उनका ईसी नंबर और नाम देकर जाइएगा। और जो भी ब्रेकफास्ट और कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपका फैमिली लोगों के लिए भी लेके जा सकते हैं। सो आप निश्चिंत रूप से ले जा सकते हैं। धन्यवाद। कल सुबह आप सबका मैं इंतज़ार रहेगा।